So the next topic in valvular heart disease is aortic regurgitation. So as we discussed aortic stenosis in previous video, we are going to discuss about regurgitation, that is aortic regurgitation in this video. So we will discuss introduction, causes, pathophysiology, clinical features, investigation and management part. So firstly we will discuss what is aortic regurgitation. So as we all know, aortic valve is present in aorta, which opens into the left ventricle. So the reverse passage of blood from aorta to left ventricle due to incomplete closure of aortic valve is aortic regurgitation. सो इसमें क्या होता है, ब्लड जो रहता है वो एओर्टा में जाने की बजाय वो बैक फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो रही है. सो अब देखेंगे उसके कॉजेस की, इसका रीज़न क्या है. सो फर्स्ट इज़ कंजेनाइटल. ये कंडीशन कंजेनाइटली प्रेजेंट रह सकती है. देन रूमेटिक डिसीजेस और रूमेटिक फीवर, ये इन्फेक्टिव कंडीशन है जो कि हार्ट को इन्वॉल्व करती है. देन इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, अगर हार्ट की इंडोकार्डियम में कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ रही है तो एज वी ऑल नो कि वॉल्व को वो लाइनिंग करके रखती है, इसीलिए उसमें भी डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है. देन ट्रॉमा, अगर कोई इंजरी हो रही है. देन एओर्टिक डायलिटेशन, एओर्टा डायलेट हो रही है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है. सो दीज आर सम कॉजेस. उसके बाद डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी. सो जैसे कि हमने देखा ब्लड जो है वो रिवर्ट बैक कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा. देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैन बी सीन. स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहेगा वो इंक्रीज होएगा. देन डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा, डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन के टाइम पे जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो तो आएगा ही, लेकिन एओर्टा से जो ब्लड है वो रिवर्ट बैक करके रिगर्जिटेट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होएगा. देन ब्रीथलेसनेस कैन बी सीन. देन वी विल डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स. Palpitation can be seen. Then there will be a paroxysmal nocturnal dyspnea. Then peripheral edema. Then angina. Then diastolic murmur can be seen. So इसमें देखेंगे अर्ली स्टेज में ये असिम्टोमेटिक रहेगा, लेकिन palpitations, syncope, dyspnea on exertion, then unpleasant pulsation on head and neck can be seen. Then we will discuss about signs. So pulse will become rapid, blood pressure will be low because there is reduced cardiac output. Then there will be left ventricular hypertrophy. Then in cardiac examination there is diastolic murmur, then apical impulses descends downward, then pulsation of carotid artery. So these are about clinical features. Then we will discuss investigation of aortic regurgitation. So in ECG left ventricular enlargement दिखेगा. Then inversion of T wave can be seen. Then in chest X-ray cardiac dilatation is seen. Then in echocardiography there will be dilated left ventricle. Then cardiac catheterization, dilated left ventricle, aortic regurgitation and dilated aortic root can be seen. So these is about investigation. Then we will discuss management part or treatment part. So first is aortic valve replacement. When aortic regurgitation causes symptoms, then it need to be combined with aortic root replacement and coronary bypass surgery. Then second is aortic root replacement. So aortic root dilatation के time पे it is necessary to replace the aortic valve. So this is about aortic regurgitation.